Good evening, you're watching the prime time on Hornbill TV. Let's have a look at the news headlines. External Affairs Minister S. Jaishankar signed 8 outcome documents highlighting India's contributions during the 23rd Shanghai Cooperation Organization's Council of Heads of Government meeting in Islamabad on Wednesday. In the wake of the ongoing MUDA scam, the chairman of the Mysore Urban Development Authority, K. Marigowda, has reportedly resigned from his post, citing health issues. Former BJP MLA Baba Gorakhnath has decided to withdraw his petition in the High Court against SP MP Avdesh Prasad so that bypolls could be held in Milkipur Assembly constituency. A petition has been moved in the Supreme Court seeking the direction to the Election Commission to conduct re-election in 20 assembly seats in Haryana, alleging suspected results and discrepancy in electronic voting machines. Let's have a look at the news in detail. External Affairs Minister S. Jaishankar signed 8 outcome documents highlighting India's contributions during the 23rd Shanghai Cooperation Organization's Council of Heads of Government meeting in Islamabad on Wednesday. Taking to social media platform X, External Affairs Minister S. Jaishankar noted 8 key takeaways from the Indian perspective on the positive and constructive contribution to the deliberations made on the concluding day of the summit. During the meeting, the External Affairs Minister developed a dialogue centered on the theme of One Earth, One Family, One Future, as well as stated that the outcomes of India's initiatives like the SCO Startup Forum, the Special Working Group on Startups and Innovation and Traditional Medicine, which received support from member states. He mentioned the inclusion of digital public infrastructure and digital inclusion as an aspect of the SCO cooperation framework. The meeting also focused on drawing inspiration from Mission Life, which is a global mass movement led by India in taking action to protect and preserve the environment towards advancing the United Nations Sustainable Development Goals. A Delhi-bound Indigo aircraft from Mumbai was diverted to Ahmedabad on Tuesday night after receiving a bomb threat, which was later found to be a hoax. The aircraft, carrying nearly 200 passengers and crew, was safely disembarked, and after a thorough check, no suspicious items were found. This is the 12th such incident in the last 2 days. According to officials, the threat was made through a tweet by an unidentified person shortly after the flight took off from Mumbai. The Mumbai Air Traffic Control alerted the pilots, who decided to make an emergency landing at Ahmedabad Airport, the closest airport at the time. The aircraft was isolated and security agencies conducted an overnight search, finding nothing suspicious. The flight resumed its journey to Delhi at 8 a.m. on Wednesday. Indigo stated that Flight 6E651 was redirected to Ahmedabad due to a security-related alert and that standard operating procedures were followed. The airline apologized for any inconvenience caused and emphasized its commitment to customer and crew safety. This incident is the latest in a series of hoax bomb threats targeting flights. On Wednesday, an Akasa Air flight from New Delhi to Bengaluru returned to the capital after receiving a bomb threat. On Monday, 3 international flights from Mumbai received similar threats, resulting in diversions and delays.
Former election strategist Prashant Kishore's Jan Suraaj party is set to make its political debut as the party readies to participate in the upcoming Bihar by-elections. On Wednesday, the party announced the names of the candidates for the by-elections, which is to be held on 4 seats: Tarari, Ramgarh, Beraganj and Imamganj assembly seats of Bihar. Jan Suraj party has fielded retired Lieutenant General S.K. Singh from the Tarari seat. Kishore disclosed that the fledgling party would name its candidates for 3 other seats where by-polls are due next month. Kishore said that every candidate would contest elections and play a major role in Jan Suraj would be even more capable than Prashant Kishore. The person would be a son of the soil of Bihar, a local, someone elected by the people, and join the efforts of Jan Suraj only to improve Bihar. क्या कहेंगे? आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या कहिएगा, आप बताइए। आपने कोई ऐसा उम्मीदवार पहले देखा हो बिहार विधानसभा के चुनाव में, हमको बताइए। जो हमने अभी तक कहा है लोगों को, जो गांव-गांव जाकर आश्वासन दिया है कि हर वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ेगा, जन स्वराज में बड़ी भूमिका में आएगा, वो प्रशांत किशोर से काबिल व्यक्ति होगा, बिहार की मिट्टी का लाल होगा, वहाँ का लोकल व्यक्ति होगा, जनता के द्वारा चुना गया होगा और सिर्फ बिहार को सुधारने, बिहार को बेहतर बनाने के नजरिए से जन स्वराज की व्यवस्था से जुड़कर प्रयास करेगा। भाई 18 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि उससे पहले तो सब घोषित कर दिया जाएगा। General Krishna Singh, the candidate announced by the party, is a former Vice Chief of the Army Staff and would contest the Tarari by-elections. Singh, who retired in 2013, hails from Tarari in Bhojpur district. पूरे दिल से सेवा करेंगे और बाकी आप लोगों का और जनता की ये है, जनता ने ही उनको बोला है कि इनको ले आइए और तरारी सुधरेगा उनके आने से। अगर उनको इतना विश्वास है तो मैं उस विश्वास को कैसे तोड़ूं? मेरे को तो आना ही है। एक सोल्जर की तरह वो लड़े थे, एक सोल्जर की तरह ये लड़ेंगे और बाकी जो ऊपर वाले के हाथ में होगा वो होगा। आरजेडी भी होगी, बीजेपी भी होगी सामने, सब वो मैं जब हम लोग दुश्मन नहीं देखते, हम देखते हैं कि हमारा एम क्या है, उसको जीतना है। हमारा लक्ष्य जो है वो बहुत पायस है, स्वच्छ है, हमारी इमेज स्वच्छ है। अगर लोगों को पसंद आएगा तो ठीक है। Union Minister Ashwani Vaishnav on Wednesday informed that the Union Cabinet has approved a 3% hike in DA for central government employees and dearness relief for pensioners. He further added that a total of Rs 9,448 crores annually will be added to the paycheck of central government employees. बड़े फैसले पे आ रहा हूं। हमारे केंद्र सरकार के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सबको बधाई। आज कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के पे चेक में ऐड होगा। बहुत बधाई सबको। इसका कैलकुलेशन वगैरह सब स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला से होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। तो दिवाली से पहले सभी केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को हार्दिक अभिनंदन और बधाई, और सभी साथियों को भी आज उपस्थित आप हुए, आप सबको धन्यवाद। और मैं अब प्रश्न लूंगा। We'll be right back after a short break. HIV doesn't discriminate. It can affect you, me, anyone. HIV prevention depends on all of us. वोकल फॉर लोकल हमारी बहुत समस्याओं का समाधान
आत्मनिर्भरता में। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वोकल फॉर लोकल के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्थानीय उत्पादों को मिला ग्लोबल मार्केट। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण में रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ है सुनिश्चित। इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ में 70 से अधिक देशों के 500 से अधिक इंटरनेशनल बायर्स सहित देश विदेश के 5 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के व्यापार को नई गति देकर अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में अहम पड़ाव साबित होगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। Welcome back after the break. Let's have a look at more news. A petition has been moved in the Supreme Court seeking direction to the Election Commission to conduct re-election in 20 assembly seats in Haryana, alleging suspect results and discrepancy in electronic voting machines. The plea was filed by Priya Mishra and Vikas Bansal through advocate Narendra Mishra, who said that the Election Commission of India declared the election of the state legislative assemblies through electronic voting machines based on accuracy. It was revealed that some EVM machines were functioning at 99% battery capacity, while some EVM machines were functioning below 80% battery capacity. Some EVMs used for counting on October 8, 2024 were operating at 99% battery capacity, while other EVMs were operating at 60 to 70% battery capacity. The petitioner also cited that the Indian National Congress Party giving the complaint presentation to the Election Commission of India. In some cases, the discrepancy was discovered in EVMs used in the same polling station, and immediately upon discovery, the Indian National Congress candidates raised this issue before the concerned returning officers. However, in the majority of the places, there was no response received in this regard, and include it under corrupt electoral practices. In the wake of the ongoing MUDA scam, the chairman of the Mysore Urban Development Authority, K. Marigowda, has reportedly resigned from his post, citing health issues. Marigowda is said to be a close associate of Chief Minister Siddaramaiah and has assumed the position of MUDA chairman on March 1 of this year. Meanwhile, BJP MP Sambit Patra has claimed that the Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has offered to return the land he received as compensation. Patra said, "This makes it clear that Siddaramaiah is embroiled in the MUDA scam head to toe." The BJP leader also said that the ED had filed a charge sheet yesterday where it says that Karnataka Maharishi Valmiki Scheduled Tribes Development Corporation's fund was diverted. Around 7 lakh people in Bellary Lok Sabha constituency were distributed ₹200 each during the 2024 general elections. The charge sheet mentions that the money that was in the custody of the Maharishi Valmiki board was used for political purpose by Congress. The suicide note of Chief Accountant P. Chandrasekharan also says that ₹187 crores were illegally shifted. कि मुदा के जो चेयरमैन है कर्नाटक में, मुदा के चेयरमैन ने अभी अभी इस्तीफा दिया है। चंद दिनों पहले सिद्धरामैया साहब जो कर्नाटक के सीएम हैं और हमें लगता है तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने भी पेशकश की थी कि जो जमीन उन्हें आवंटित हुई थी मुआवजा के रूप में, उस जमीन को वो वापस करेंगे। तो 1+1 मिलकर 2 होता है। मुदा के चेयरमैन का इस्तीफा
और जमीन वापस करने की जो पेशकश सीएम साहब की रही है कर्नाटक में, ये एक बात स्पष्ट करता है कि मुदा स्कैम में सर से पांव तक कांग्रेस पार्टी के वहां के सबसे बड़े नेता सिद्धरमैया जी खुद लिप्त हैं। फ्रॉम हेड टू टो, सिद्धरमैया, द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, is embroiled in the मुदा scam. There is no doubt about it. आप सभी जानते हैं कि कल ईडी ने भी एक चार्जशीट फाइल किया है। केवल मुदा के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया है ऐसा नहीं हुआ है, ईडी के चार्जशीट का भी इफेक्ट रहा है। ईडी के चार्जशीट में यह दावा किया गया है और सुनकर ही मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस प्रकार भी राजनीति होती है कि ये जो कर्नाटक में कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम, हमारे अनुसूचित जाति के लोग और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए एससी एसटी वेलफेयर के लिए जो फंड है कर्नाटक में, दैट लाइज अंडर द एजिस ऑफ महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम, उसके फंड में किस प्रकार से उसे डाइवर्ट करके आम चुनाव जो अभी 2024 में हुए थे, उस आम चुनाव में बेल्लारी लोकसभा में लगभग 7 लाख से अधिक लोगों को 200 रुपए करके बांटा गया है। इनफैक्ट द ईडी's चार्जशीट categorically mentions that the money which was meant for the welfare of SC and the ST community, which was in the custody of the Maharshi Valmiki board, which was in fact the money of the taxpayers, that was used for a political purpose by the Congress party. कांग्रेस ने 7 लाख वोटर्स को कांग्रेस को वोट देने के लिए 200 रुपए, किसी को 200, किसी को 300, किसी को 400, इस प्रकार से वहां बांटा है। दे ट्राइड टू इन्फ्लुएंस द इलेक्शन ऑफ बेल्लारी लोकसभा सीट। और आप सभी जानते हैं कि जहां तक ये मुदा स्कैम का विषय है, इसमें जो लेखा अधीक्षक, द चीफ अकाउंटेंट जो मुदा के रहे थे, पी चंद्रशेखर, ही हैड कमिटेड सुइसाइड, उन्होंने आत्महत्या की थी। और जो उन्होंने सुइसाइड नोट छोड़ा था, उस सुइसाइड नोट में बहुत कुछ चौंकाने वाला था। उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि निगम के बैंक खाते से, महर्षि वाल्मीकि निगम जो है, उस निगम के बैंक खाते से लगभग 187 करोड़ रुपए अनाधिकृत हस्तांतरण, इलीगल शिफ्टिंग हुई है। And there is a rule across the country that the money which is specifically allotted for the welfare of the SC/ST community cannot be diverted. आप बाकी फंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, मगर जो SC/ST कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए जो पैसा है, उस पैसे को कदाचित आप किसी और काम के लिए डाइवर्ट नहीं कर सकते। It is too much of a coincidence, I will say, that Rahul Gandhi goes to America and he declares that हम कभी सत्ता में आएंगे तो हम आरक्षण समाप्त कर सकते हैं, और simultaneously we see that in Karnataka the money which is meant for the welfare of the SC/ST community is diverted and is used for purposes to satisfy the political needs of Congress party's leaders. मुझे तो बोलते हुए भी आश्चर्य लग रहा है और आप सब हैरान परेशान होंगे कि जिस प्रकार की ये नोट सामने आई है, महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड के जो पैसों का इस्तेमाल कांग्रेस नेताओं ने न केवल चुनाव में किया, मगर एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी भी खरीदी गई है। We'll be right back after a short break. कॉलेज बोले तो दोस्ती यारी, यारों संग है फ्रीडम सारी। फ्रीडम इक्वल्स टाइम ऑफ लाइफ, लाइफ माने एक जॉय राइड।
Activa, 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 scooter એટલે Activa. स्कूटर बोले तो एक्टिवा। HIV Don't share plates with an HIV infected Kissing person. can transmit HIV. Mosquito bite HIV can spread be passed HIV. through air. Don't believe the misconceptions of HIV. Stay informed, stay safe. कॉलेज बोले तो दोस्ती यारी यारों संग है फ्रीडम सारी फ्रीडम इक्वल्स टाइम ऑफ लाइफ माने जॉय राइड एक्टिवा 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 स्कूटर એટલે एक्टिवा स्कूटर बोले तो एक्टिवा। Welcome back after the break. Let's have a look at more news. Former BJP MLA Baba Gorakhnath has decided to withdraw his petition in the High Court against Samajwadi Party MP Avdesh Prasad so that the by-polls could be held in Milkipur Assembly constituency. The Election Commission on Tuesday announced by-polls in 48 constituencies across 15 states, including 9 seats in Uttar Pradesh. However, the Milkipur Assembly by-poll was not part of the list as Gorakhnath's petition against the Samajwadi Party leader is still pending in the Allahabad High Court. Gorakhnath has alleged that Prasad's oath was incorrect while filing nomination in the 2022 Milkipur Assembly by-poll. The writ states that the notary who attested Prasad's documents did not have a valid license on the date of filing nominations. The matter remains sub judice and consequently the by-election announcements has been postponed until the court reaches a verdict on the petition filed by Gorakhnath. The Election Commission on Tuesday declared the by-polls for 9 of the 10 vacant seats of the Uttar Pradesh Legislative Assembly, which will be held on November 13th and results will be out on November 23rd. माननीय अवधेश प्रसाद जी ने जो जब विधानसभा चुनाव कोई भी लड़ता है तो नोटरी कराता है सारे कागजों का, तो जिससे उन्होंने जिस वकील साहब से उन्होंने कराया था नोटरी, वो 6 साल पहले उनका लाइसेंस निरस्त था। ये बात जैसे पता चली हम लोगों ने अधिवक्ताओं के संपर्क में किया और उस पर हम लोगों ने याचिका डाली, मुकदमा किया और कोर्ट ने उसको माना कि ये गलत है। उस पर सुनवाई चल रही थी। इसी बीच में लोकसभा चुनाव हुआ, वो जीते, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो फिर विधिक राय ली गई। फिर भी पता चला कि नहीं, अब वो शून्य हो गया है। पर आयोग का जो निर्णय कल आया वो चौंकाने वाला है, तो इसलिए हम आज अपने अधिवक्ताओं के साथ जाकर उस याचिका को वापस ले लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, पूरी तैयारी हो चुकी थी। 2 महीने से लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां जा रहे थे, हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे थे, कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। और जब ये बात पता चली तो काफ़ी चौंकाने वाली बात पता चली, मतलब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ की जनता ज़्यादा लंबा सफ़र ना करे, इसलिए जो है हम लोग तो चुनाव चाहते ही हैं। और विरोधियों द्वारा जो तरह तरह के तंज कसे जा रहे हैं वो सब ऐसी कोई बात नहीं है, सब निराधार बात है। हम आज जाके अपनी याचिका वापस ले लेंगे और अतिशीघ्र ही चुनाव आयोग वहाँ मिल्कीपुर में चुनाव कराएगा। Meanwhile, Samajwadi Party MP Avdesh Prasad, commenting on UP by-polls, said that after the Milkipur seat fell vacant, the writ filed by a BJP member against him became infructuous and he had resigned. Prasad said that it was Gorakhnath's moral duty to take back his writ. This seat has become very important as it is connected to Akhilesh Yadav and Ayodhya. है उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें हमारी सीट जिस पर हम विधायक थे, जनपद अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट की, जिस पर हम विधायक थे, और मैंने जो है
12 जून को इस्तीफा दिया, जिस इस्तीफे को माननीय विधानसभा अध्यक्ष महाना जी ने स्वीकार कर लिया 13 तारीख को, और उसी दिन माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस्तीफा 12 तारीख को दिया था, उनका भी 13 तारीख को मंजूर हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, और इसकी सूचना उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त को भी और संबंधित जिलाधिकारियों सबको दे दी गई। ये वैकेंट सीट हो गई, और एक सज्जन ने जो हमारे मुकाबले चुनाव हारे थे, उन्होंने रिट दायर कर दिया था, और रिट उस समय इन्फेक्चुअस हो गई जिस समय हम चुनाव जीत गए, और जिस समय सीट वैकेंट हो गई तो रिट इन्फेक्चुअस हो गई। हाँ, चुनाव जीतने पर, और चुनाव जीतने के बाद विधानसभा मिल्कीपुर से एमएलए का इस्तीफा देने के बाद, विधायक का इस्तीफा देने के बाद वैकेंट हो गई, और वैकेंट घोषित हो गई, तो जो भी रिट है वो इन द आई ऑफ लॉ ये इन्फेक्चुअस हो गई। अब जब इन्फेक्चुअस हो गई तो जिसने रिट किया था, भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार था, हारा है, और चर्चा है संभावित उम्मीदवार इस बाई इलेक्शन में भी होता, तो उसकी एक मॉरल ड्यूटी थी कि जब मैंने इस्तीफा दे दिया, सीट जो है इन्फेक्चुअस हो गई, और इस्तीफा दिए हुए आज 4 महीने से ज्यादा हो गया, जोड़ लें आप, 13 जून को वो हुआ है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने से ज्यादा हो गया। तो उसका मॉरल ड्यूटी थी कि वो अपना रिट वापस ले लेता। जब ये जाना कि इन्फेक्शस हो गई तो रिट वापस नहीं लिया। अब सुनते हैं रिट वापस ले रहे हैं, तो हमारी तो मॉरल विजय हो गई। और अब क्यों नहीं लिया, उनकी रणनीति है कि डर रहे हैं, ये सीट बड़ी इंपॉर्टेंट सीट हो गई है। इसकी चर्चा जो है बीजेपी के लोगों ने राष्ट्रीय विधानसभा बना दिया है, क्योंकि अयोध्या से जुड़ी हुई है, ये माननीय अखिलेश यादव से जुड़ी हुई है, अवधेश प्रसाद कार्यकर्ता से जुड़ी हुई है। तो इसकी चर्चा देश और दुनिया में हो रही है, और उसी क्षेत्र का मिल्कीपुर है, तो इसीलिए। और माननीय योगी जी 4 बार कार्यक्रम लगाए, 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री उनके 1 महीना से, लेकिन जनता टच से मस नहीं है। पूरा डिसाइड है कि हमें तो समाजवादी पार्टी को जिताना है, साइकिल पर बटन दबाना है, इंतजारी केवल है चुनाव आयोग कब तिथि घोषित करे, कब मौका मिले कि हम साइकिल के बटन दबा करके और अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव ऐतिहासिक जीत करें, जिससे कि जिस तरह से अवधेश प्रसाद को जिताया तो देश और दुनिया में चर्चा हो रही है, उसी तरह से अजीत प्रसाद को जिताकर एक इतिहास बनाना चाहती है वहां की महान जनता, वहां के देवतुल्य मतदाता। तो ये डर है, इसलिए नहीं किया। और हमारे नेता ने कह ही दिया कल कि जंग जो टाला जंग हारा। माननीय अखिलेश जी ने कह दिया जो जंग टाला वो जंग हारा, तो वो हार गए हैं और हमारी नैतिक जीत हो गई है। निश्चित तौर से आने वाला चुनाव जो होगा बहुत बड़े वोटों से समाजवादी पार्टी जीतेगी। हमारा बेटा अजीत बहुत बड़े वोटों से एक इतिहास कायम करेगा और क्षेत्र का विकास और निर्माण और आपसदारी भाईचारा को कायम करेगा। लोगों को के बीच रह करके राजनीति नहीं करेगा, बल्कि सेवा करेगा, क्षेत्र का उत्थान और विकास करेगा और ऊंचाई तक क्षेत्र को पहुंचाएगा। In an exciting discovery, more than 446 butterfly species have been reported from Kaziranga National Park, making it the 2nd highest in the country next to Namdapha National Park in Arunachal Pradesh. This remarkable finding is the result of years of research by Dr. Monsoom Jyoti Gogoi, a young scientist hailing from Kaziranga, a press release said.
The first ever Butterfly Conservation Meet 2024, held from September 27 to 29, attracted approximately 40 butterflies enthusiasts from across India. Attendees included representatives from Northeastern Hill University, Cotton University and various Assam colleges, the Maharashtra Forest Department, Corbett Foundation and key members of the Northeast Butterflies Group. The event focused on detailed butterfly records and further dissemination on the butterfly status. A total of 85 species of butterflies were observed during the meet. The Butterfly Conservation Meet aims to elevate awareness around the importance of butterfly conservation in Kaziranga. By highlighting the rich diversity of species in the region, the event encourages further research, monitoring and habitat protection initiatives. It ensures that butterflies become an integral part of Kaziranga's conservation priorities alongside its iconic Big Five: the Bengal tiger, Indian rhinoceros, Indian Asian elephant, wild water buffalo and swamp deer. The meet has laid a strong foundation for future efforts to preserve these vital pollinators and the ecosystems they support, the release added. That is all we have for now. For more news and updates, keep watching Hornbill TV.